Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will learn the CNC lathe machine and CNC simulator. Those who are new to CNC machining and would like to know more about CNC machining, this lecture is fruitful for those students. There are so many CNC machines, but today we will discuss only the CNC lathe machine and Cnc Lathe simulator. As we know that a lathe spins the workpiece in a spindle while a fixed cutting tool approaches the workpiece to slice chips off of it. Because of this geometry, lathes are ideal for parts that have symmetry around some axis that could be chucked up in the spindle. लेथ मशीन जो कन्वेंशनल लेथ मशीन है उसमें जो ऑपरेटर है वो बाय हैंड जो है उसके कैरिज को और उसके स्पिंडल को और उसके टूल को कंट्रोल करता है और डिज़ायर शेप को बाय हैंड मैन्युअली जो है वो इसको करता है, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो कन्वेंशनल लेथ मशीन में ऑपरेटर का मैन्युअली काम करना एक essential है as compared to conventional lathe machine with CNC lathe machine. In a CNC machine, functions and slide movements are controlled by motors using computer programs. So basically, CNC machine is a computer numerical control machine. In conventional lathe machine, an operator decides and adjusts various machine parameters like what is the feed, what is depth of cut, what is spindle speed, what is the tool we used in the process. All are depending on the type of job, and all controls the slide movements by the operator manually. But in a CNC machine, all the functions and slide movements are controlled by motors automatically using computer programs. In CNC machine, there is a main controller unit. Controller unit is the heart of the CNC machine. Controller unit contains the main display screen, different keys, different control switches. In main display screen there are different options. For example, what is the x-axis coordinates, what is the z-axis coordinates, what is the spindle speed, what is the feed rate, and what is the different options just like linear interpolation, G codes, and different coolant on off options are displayed on the screen. In computer numerical control technology, it is a form of programmable automation in which process is controlled by numbers, letters and symbols. CNC टेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट कोड्स और प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए जो हम मैनुअल लेथ में प्रोसेस करते थे, जैसे टर्निंग, स्टेप टर्निंग, ड्रिलिंग, वो सारे प्रोसेस हम CNC मशीन में भी करते हैं। बट उसका तरीक़ाकार ये है कि हमने डिफरेंट नंबर्स, लेटर्स एंड सिंबल्स को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम लिखना है और वो प्रोग्राम आगे उस प्रोसेस को आगे चलाएगा। Numerical control refers to operation of machine tools from numerical data stored on paper or magnetic tape. NC is not a machining method, it is means of machine control. Because control instructions are issued to machine using numbers, concept is called numerical control. Numerical control जो है वो basically जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, कमांड्स है कि जो मशीन को बताती है कि आपने अब कौन सी मूवमेंट लेनी है, कौन सा टूल यूज़ करना है।
बेसिकली पुराने वक्तों में एक मैग्नेटिक टेप यूज़ होती थी। उस पे पहले इस सारे प्रोग्राम को एक पेपर की फॉर्म में लिख के पहले उस टेप पे स्टोर किया जाता था। फिर उस मैग्नेटिक टेप को इंसर्ट किया जाता था सीएनसी मशीन के अंदर। उसके बाद जो है वो सीएनसी मशीन जो है सारे प्रोसेस को करते था। अब ऐसा है कि सीएनसी मशीन को हमने कनेक्ट किया होता है कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली उसको वो प्रोग्राम एंड वो जो कमांड्स होती है वो डायरेक्टली कंट्रोल पैनल को देता है, और कंट्रोल पैनल फर्दर जो है आगे उस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है। Basic components of CNC technology is program of instruction, machine control unit, and machine tool. As we already discussed in previous slide, what is the function of machine controller unit in the CNC machine? Machine controller unit comprises electronic hardware that reads program of instruction and converts it into instruction for mechanical movements of tool and work holding devices of the machine. मशीन कंट्रोलर यूनिट जो है वो पूरी सीएनसी मशीन के पूरे होल प्रोसेस को कंट्रोल करता है। उसमें मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ टूल एंड वर्क होल्डिंग डिवाइसेस ऑफ मशीन, जिसमें स्पिंडल स्पीड है, जिसमें कूलेंट ऑन ऑफ है, जिसमें डिफरेंट फंक्शन है, उसको मशीन कंट्रोलर यूनिट जो है वो कंट्रोल करता है। Now in CNC technology, each machine with its own computer. With the emergence of cheap personal computers were directly attached to main controller unit. Initially, tapes were fed to the computer memory to transfer numerical control part programs to computer memory. Slowly, the tape disappeared. The computer attached with each machine was able to provide programming development, storage, and processing facilities. Now, configuration of CNC system is follow that cycle in which first program of instructions are developed, then computer storage and processing, and then computer hardware interface and servo system, and at the last working on the machine. There are many CNC advantages as compared to manual lathe machine. In conventional lathe machine, there are no computer control, but in CNC machine, there are computer control which are more precise and accurate work done as compared to lathe machine. And online testing and validation of NC program is the main advantage as compared to conventional lathe machine. Increased flexibility and control of machine over local computer, easy to integrate into flexible manufacturing system. With CNC lathe machine, the material being worked is slowly sheared away. The result is a beautifully finished product or intricate part. Because these machines are so versatile, they are used by many industries to include automotive, electronic, aerospace, firearm manufacturing, sporting, and much more. A CNC lathe can be used to produce plane surfaces and screw threads more precisely as compared to conventional lathe machine. In CNC machine, machine controller unit decides cutting speed, feed rate, depth of cut, tool selection, coolant on off, and tool path. The machine controller unit issues commands in form of numeric data to motors that position slides and tool accordingly.
Machine controller unit of CNC machine contains display unit, keyboard section, control panel section. In keyboard section, we manually insert the program commands which are showing in the display unit. Control panel contain different control switches which on off the mode of different processes. As we know that the numerical control part programming is the writing instruction for the machine parts, movements and tool positions control. It specifies the sequence of processing steps on a numerical control machine. There are different ways of data input of NC programming method. First one is manual part programming method, second one is computer assisted, third one is MDI method which means manual data input, fourth one is NC programming using CAD/CAM, fifth one is computer automated part programming. In manual part programming, first processing instructions put on part program manuscript. Listing of commands related to tool positioning, tool path travelers, tool speeds, tool feeds. Then punch tape is prepared from the manuscript, which further punch tape is inserted in the CNC control panel. In manual data input procedure in which NC program is entered directly into the machine control unit at the site of the processing machine. Use of punch tape is avoided. Machine operators do the NC part programming instead of part programmers. इस स्टेप में मशीन ऑपरेटर डायरेक्टली MCU जो कि मशीन कंट्रोलर यूनिट है उस पर डायरेक्टली अपने हाथ से जो है वो सारी कमांड्स हैं जो प्रोग्राम है एमसी का वो इंटर करते हैं। इसमें पंच टेप जो है वो यूज़ नहीं होती और इसमें ऑन द स्पॉट जो उसने प्रोग्राम एंटर किया होता है वो ही आगे एग्जीक्यूट होता है। That diagram shows the manual data input procedure in which NC program is entered directly into the MCU machine control unit at the side of the processing machine. Machine operators do the NC part programming. In computer assisted technique, NC part programmer develop a program on the computer. Then further that computer connected with the control panel of the CNC machine to perform various operations. In this diagram, both computer-assisted programming and programming at MCU are showing. In computer-assisted programming, computer is connected with control panel of the CNC machine. But in MDI method, manual data input method, and an operator directly insert the program on the main control unit section. CNC program is fuel for the CNC machining operations. Basically, CNC instructions are called part program commands. When running a part program is interpreted one command line at a time until all lines are completed. Commands, which are also referred to as blocks, are made up of words which each begin with a letter address and end with a numerical value.
बेसिकली सीएनसी जो प्रोग्राम है वो कमांड्स पर मुश्तमिल जो है वो एक गाइडलाइंस हैं जो सीएनसी को बताती है कि इस कमांड के पीछे आपने इस प्रोसेस को करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कमांड M03 प्रेस करता हूँ या इंटर करता हूँ प्रोग्राम में, तो वो जो कमांड है वो बेसिकली इन्फॉर्म कर रही है कंट्रोल पैनल को कि वो स्पिंडल को ऑन कर दे, और स्पिंडल अगर ऑन हो भी जाए तो वो क्लॉकवाइज मूव करे या काउंटर क्लॉकवाइज मूव करे। अब ये बताना भी जो है हमने प्रोग्राम में बताना है। अब इसी तरह ही हमने अब प्रोसेस तो शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, अब हमने कूलेंट को ऑन करना है। तो कूलेंट को ऑन करने के लिए M08 की कमांड, अब जब आप M08 की कमांड लगाते हैं तो वो बेसिकली कूलेंट को ऑन करने के लिए होती है। In CNC programming there are some important points which are very important things to know. फर्स्ट वन, कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको ये बताना होगा प्रोग्राम के स्टार्ट में कि आप कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके चल रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं या ये जो हैं दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं। यूनिट्स आपको बताने पड़ेंगे कि ये मिलीमीटर्स में हैं या इंचेस में हैं, या अगर आप इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का बताते हैं तो वो भी आपको शुरू में बताना पड़ेगा। इसी तरह कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी की कौन कौन सी लोकेशन में कितना एक्स में उसने काटना है, कितना जेड में उसने काटना है। इसी तरह फीड रेट क्या होगी, स्पिंडल स्पीड क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपने इसको प्रोग्राम के स्टार्ट में बतानी है। इसी तरह कूलेंट कंट्रोल कि कूलेंट को कब ऑन करना है इस प्रोग्राम के स्टार्ट में और कब इसको ऑफ करना है कंट्रोल प्रोग्राम के एंड पे। इसी तरह अब क्योंकि ये तो सीएनसी मशीन है, इसमें टर्रेट में बहुत सारे टूल लगे होते हैं, तो कौन सा टूल और उसकी पैरामीटर्स क्या होंगे, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हर प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इन सीएनसी programming consists of a series of instructions in the form of letter codes. For example, G codes, initial machining setup and establishing operating conditions. CNC प्रोग्रामिंग में बेसिकली मुख्तलिफ कोड्स हैं जिसमें G कोड्स हैं, N कोड्स हैं, M कोड्स हैं, एक्सेस कोड्स हैं, फीड एंड स्पीड कंट्रोल्स के कोड्स हैं, टूल कोड्स हैं, मिसक्यूलस कोड्स हैं। अब आपने ये जो कोड्स हैं इनकी अपनी एक हैसियत है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जी कोड बेसिकली यूज़ होते हैं इनिशियल मशीनिंग सेटअप के लिए, एस्टेब्लिशिंग ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपने फेसिंग का साइकिल चलाना है, तो फेसिंग के साइकिल के लिए G94 का कोड है। इसी तरह ड्रिलिंग कोड अलग हैं, वो G84 है आई थिंक। इसी तरह टर्निंग के हैं वो G71 हैं। इसी तरह एन कोड्स बेसिकली ये प्रोग्राम लाइन नंबर को डिनोट करते हैं। इसी तरह एक्सेस कोड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में कि आप कौन से कोऑर्डिनेट्स को लेकर चल रहे हैं। यूज टू स्पेसिफाई मोशन ऑफ द स्लाइड अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन। इसमें फिर सेकेंडरी मोशन आ जाती है कि एक्स और जेड के जो सेकेंडरी मोशन है यू और डब्ल्यू की उसमें, तो वो किस तरह उसका कोड होता है, वो उसके लिए एक्सेस कोड्स होते हैं। फीड जो है वो उसका सिंपल एफ से डिनोट करते हैं और ये इसमें यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। इसी तरह स्पीड के कोड्स हैं वो एस से होते हैं, डिनोट करते हैं, और ये स्पिंडल की स्पीड को डिनोट करते हैं। टूल कोड्स बेसिकली आपके टर्रेट पर कौन से नंबर पे कौन सा टूल लगा ये टी से डिनोट करते हैं, तो आपने इसको जस्ट लाइक मेरे टर्रेट 1 पे अगर एक टूल लगा है तो मैं T01 का कोड इसमें लिखूंगा। मिसक्यूलस कोड्स में एम कोड्स हैं, जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने बता दिया कि जैसे कि कूलेंट को ऑन करना, कूलेंट को ऑफ करना, प्रोग्राम को स्टार्ट करना, प्रोग्राम को एंड करना, और इसी तरह स्पिंडल के काउंटर क्लॉकवाइज चलाना और या क्लॉकवाइज चलाना, उसके कोड्स हैं। प्रोग्रामिंग की लेटर्स, देयर आर मैनी program codes in the CNC simulator which are start from the capital key letters. For example, O is denoting the program number used for program identification. N is for sequence number, line number,
in the program. G is the preparatory function, is used for different commands, just like facing cycle, just like turning cycle, just like drilling cycle, and for units, for feed rate, different G codes are used in the CNC simulator. X-axis designation, Y, Z, radius, these are the coordinates points. For example, if I cut a workpiece about 10 mm, then I give up coordinates of X and Z in the form of different points. F is feed rate, S is spindle speed designation, H is tool length offset designation, D is tool radius offset designation, T for tool designation, and M for miscellaneous function. For example, coolant on off, program end, spindle speed. For example, M08 is for coolant on and M09 is coolant off. Table of imported G codes. G001 बेसिकली लीनियर इंटरपोलेशन के लिए होता है कि आपने अपने वर्क पीस को कैसे जो है एक्सेलरेट करवाना है। अगर आपने G00 की कमांड दी है तो इसका मतलब लीनियर इंटरपोलेशन होगी, और अगर आपने G01 की कमांड दी है तो ये वर्किंग फीट के हिसाब से इसकी जो है वो एक्सेलरेट करेगा। इसके साथ G02 और G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज है। इसी तरह G04 टाइम डिले के लिए है। G21 जो है ये डाटा एंट्री के यूनिट्स को बताता है कि इंचेस में है या मिलीमीटर्स में है। इसी तरह G28 रिटर्न टू द रेफरेंस पॉइंट, बेसिकली ये सेकेंडरी मोशन एक्स और जी के जो पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका अगर Z है एक्सिस है और ये आपका X एक्सिस है, तो इसके भी फर्दर सेकेंडरी जो हैं वो यूनिट्स होंगे जो U और W की शेप में होंगे, उसके लिए G28 का कोड यूज़ होता है। इसके बाद हम आते हैं उस पे अपने पॉइंट पे कि G32 और G34 ये थ्रेडिंग साइकिल्स के हैं विथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल पिच इन सिंगल पास। इस तरह G42 का है ऑटोमेटिक टूल रेडियस कंपनसेशन, कि आप सिस्टम पर छोड़ देते हैं कि वो टूल की जो रेडियस है उसकी कंपनसेशन को क्या रखते हैं। G50 जो है वो सेटिंग द मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड, और G53 से G59 तक ये बेसिकली आप स्विच करते हैं अपने वर्किंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में। G70 से G76 जो है वो मेन टर्निंग साइकिल्स हैं। G80 से G83 ड्रिलिंग साइकिल्स हैं। इसी तरह G90 से जो आपके हैं ये साइकिल हैं मेन टर्निंग ऑफ द एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर के हैं। इसी तरह G92 जो है वो कांस्टेंट पिच थ्रेडिंग साइकिल के लिए है। G94 का जो साइकिल है ये बेसिकली आपका जो है वो है मेन एक्सटर्नल इंटरनल एंड टर्निंग का है। फेसिंग के लिए बेसिकली ये वाला साइकिल हम यूज़ करते हैं। G96 बेसिकली कांस्टेंट कटिंग स्पीड के लिए होता है। G97 स्पिंडल स्पीड के लिए होता है। G98 फीड रेट का यूनिट के लिए है मिलीमीटर पर मिनट, और G99 है फीड रेट का यूनिट मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन के लिए। एम कोड बेसिकली प्रोग्राम के स्टार्ट में और एंड पर जो है ये हम यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट हैं, जैसे M00 सॉफ्टवेयर स्टॉप विथ कंफर्मेशन, M02 और M30। M02 है कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, और M30 आपका प्रोग्राम एंड हो चुका है। M03 में स्टार्ट स्पिंडल रोटेशन है क्लॉकवाइज, और M04 में है स्टार्ट स्पिंडल रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज। इसी तरह आपके जो है M05 स्पिंडल रोटेशन स्टॉप है। M07 से M09 का जो साइकिल है ये टर्निंग ऑन ऑफ द कूलेंट सप्लाई है। इसी तरह M38 और M39 ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ ऑटोमेटिक डोर्स है, जो कि CNC का अपना डोर होता है उसको क्लोज और ऑफ करने के लिए, ओपन और क्लोज करने के लिए हम M38 39 का कोड यूज़ करते हैं। M97 और M99 तक जो है वो कॉल एंड एंड ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल रूटीन्स।
اس کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. When you open the CNC Lathe Simulator software, the main screen of the program is represented by a three-dimensional screen, the main object of which is a graphical polygonal model of a lathe placed in a conditional spatial environment. Throughout the entire session with the program, a navigation bar is displayed on the right side of the screen. The first button of the panel is designed to open the program termination dialog box. جب آپ اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے جو آپ کو وارن کرتا ہے کہ اگر آپ نے سافٹ ویئر جو پروگرام ہے اس کو سیو نہیں کیا تو آپ کا جو پروگرام ہے وہ ضائع ہو جائے گا. جو سیکنڈ بٹن ہے وہ فائل مینیجر کے بارے میں ہے. جب آپ اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو 3 آپشنز آپ کے سامنے آتے ہیں. فرسٹ ون از نیو پروجیکٹ, سیکنڈ ون از open project, and third one is save project. When you click on the file manager option button, there are further 3 options are open. The first option is about new project, the second option is about open project, and the third one is about save project. When you click on the first option, a new project, reset all the parameters to the default value. The first function button reset all parameters of the current project to the default values. یہ جو آپشن ہوتا ہے اس سے آپ اپنا نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کے لیے اس کو پریس کرتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ آل پیرامیٹرز خود سے ایڈجسٹ کرنے پڑیں گے. اس میں آپ کو اپنا ورک پیس کی ڈائمینشنز دینی پڑے گی, آپ کو اپنے ٹول سلیکٹ کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی پروگرامنگ لکھنی پڑے گی پوری. جو سیکنڈ آپشنز ہے اوپن پروجیکٹ کی, اس کو جب آپ پریس کرتے ہیں تو پہلے سے بلٹ ان جو پروگرام جو ہیں وہ بنے ہوئے جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملیں گے. اس میں ڈیفرنٹ آپ کو سائیکلز ملیں گے. جو تھرڈ آپشن ہے وہ سیو پروجیکٹ کا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ 2 میں سے جو بھی آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اور اس میں آپ نے فردر اپنی ایڈیٹنگ کر چکے ہیں تو آپ اس کو نیو نیم سے سیو کر سکتے ہیں. When you click on the open project, a list of directories is represented on the left side of the file open dialog. The root directory is created in the system during the installation of the program. Directories located above the root hierarchy are not accessed through the built-in file manager. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اوپن پروجیکٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ڈیفرنٹ ڈائریکٹریز اوپن ہو جاتی ہیں. یہ ساری ڈائریکٹریز آپ کے سسٹم میں بلٹ ان جو ہے وہ سیو ہوں گی. جب آپ اس پروگرام کو انسٹال کر رہے تھے تو یہ جتنی بھی ڈائریکٹریز تھی یہ ساری آپ کے پروگرام آپ کے جو سسٹم ہے اس میں سیو ہو چکی ہیں. اب جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے یہ ڈیفرنٹ جو ہے آپ کے جو ہے پروگرام کی فائلز ہیں جو پہلے سے بنی ہوئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ ان فائلز کو کلک کر کے آپ ان کو اوکے جب کنفرم ایکشن کرتے ہیں تو آپ سیدھا مین ونڈو پر چلے جاتے ہیں جہاں سے آپ اس پروگرام کو اگر رن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پورا پروگرام کی سیمولیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. The third button on the navigation bar brings up the workpiece parameter setup dialog box. The main element of the blank parameter settings screen are the dimensional reference field and the blank parameters panel. Basic variable dimensional parameters of the workpiece are length, diameter, clamp length and end allowance. جو بیسک پرپز ہے اس سلائڈ کا وہ یہ ہے کہ جب آپ کلک کرتے ہیں
वर्क पीस सेटिंग डायलॉग बॉक्स पर, तो आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन होते हैं, जिसमें से मेन हमने इन चार को देखना होता है। जिसमें सबसे पहला जो है वो वर्क पीस की लेंथ है, सेकंड वन वर्क पीस डायमीटर है, थर्ड वन क्लैंप लेंथ है, एंड फोर्थ जो है वो एंड अलाउंस है कि आप इसमें कितनी अलाउंस रखना चाहते हैं। The fourth button of the navigation panel brings up the Tools Setting dialog box. On the left side of the screen is a Tools catalog list, including 185 names of various tools for external and internal processing of parts. Each list items begins with an interactive tools icon that outlines the shape of the plate and the recommended directions for the feeds. On the right side of the tool parameter settings screens, a row of square cells with serial number from 1 to 8 is located at the top, which corresponds to the position of the turret. To set the tools in the desired position of the turret, you must move the mouse pointer over the icon with the image of the tools in the list. Then press the mouse button. Then press the left mouse button and hold it pressed. Move the icon to the free cell in the upper right part of the screen and then release the mouse button. The fifth button of the navigation panel displays on the main screen of the simulator a built-in text editor of control program. The text editor has in the upper part a panel of functional buttons necessary for working with machine control program code. The main part of the text editor is occupied by a text field equipped with vertical and horizontal scroll bars. Basically, ये जो कोड एडिटर जो फंक्शन है वो जब आप 5 नंबर पर ये जो आइकन है इसको जब प्रेस करते हैं तो ये आपके सामने ओपन होता है। तो इसमें आप अपने पूरे कोड को लिखते हैं और फिर इसी कोड को फर्दर आप आगे रन करके सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। The button for showing hiding the virtual keyboard is located in the lower right part of the editor. Typing in a text field can be carried out using both physical and virtual keyboards. आप जो हैं इस यहाँ से भी अपने जो हैं वो G&M कोड्स को एंटर कर सकते हैं और आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड या अपने मोबाइल के टच पैड से भी इन कमांड्स को एंटर कर सकते हैं। There are 8 options in the code editor function toolbar. First one is all button. When you selected the all button, all the text of the control program will be copied to the clipboard. Otherwise, if there is a selected fragment of text, only the selected text is copied to the clipboard. The second one is cut button. When you click on the cut button is activated when there is a selected fragment of text. When you click on this button, a standard copy operation is performed with the subsequent removal of the selected fragment from the text. The third option is paste button. The paste button is activated when there is a text in the clipboard. The insert is in the opposition of the text cursor. If a fragment is selected in the text, this text fragment is replaced. इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है और उसको कॉपी किया हुआ है तो आप इसको न्यू में प्लेस कर सकते हैं। Fourth option is delete button. The delete button is designed to instantly delete all the text of the control program
with confirmation. 5, 6, 7 ये जो तीन बटन है स्टार्ट, पॉज और स्टॉप का, इनका फंक्शन ये है कि जब आप प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं उसकी सिमुलेशन प्रोसेस को, तो उसको कहाँ पे आपने रोकना है, फिर कहाँ पे आपने उसको स्टार्ट करना है, ये उसके लिए। मगर इसमें एक और ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। आप ड्यूरिंग सिमुलेशन जो है वो एडिटिंग नहीं कर सकते कोड की। जो सबसे लास्ट पे जो आपके पास बटन है वो है डायरेक्टरी ऑफ यूज्ड कोड्स। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने कोड यूज़ किए हैं, अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी जी और एम कोड्स की, विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्मेट, और आपको उसका इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन किस पर्पस के लिए। On the left side of the main screen of the simulator, there are additional function buttons that are responsible for various program settings. The first button is About Program. When you click on this button, a display on the screen information about the current version of the program, contact information of the developer, as well as license informations are displayed on the screen. The second option is about the switch language. When you click on this button, there are two languages, one is English and other one is Russian language. You are select the English language to carry out the whole process. Third option is turn on off sound option. The turn on off sound button is used to turn on off the sound accompaniment of the simulation process. पूरे होल प्रोसेस की जो साउंड है उसको ऑन और ऑफ इस बटन से किया जाता है। जो फोर्थ बटन है वो स्विचिंग द ग्राफिक मोड। इसमें दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप जो है हाईली पोली मोड को यूज़ करें और दूसरा है लो पोली मोड को यूज़ करें। जो हाई पोली मोड है उसमें जो है आपके होल जो 3D इन्वायरमेंट है वो आपको नज़र आएगा, उसमें आपको कूलेंट नज़र आएगा, उसमें आपको पूरा प्रोसेस नज़र होता हुआ आएगा। जो 2D इन्वायरमेंट है, जो लो पोली मोड है, उसमें आपको ओनली जो है आपकी कंसिडरेशन जो है वो ओनली अबाउट जो है वो वर्क पीस है कि उसकी कटिंग कैसे हो रही। The fifth button is turn on of 2D geometry button. The 2D geometry button turn on off is used to turn on off the two-dimensional geometric construction in the three-dimensional space of the simulator. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसमें नज़र आएगा कि आपके वर्क पीस की डायमेंशंस क्या हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आपको नज़र आएंगे, और इसमें आपको नज़र आएगा कि आपका टूल जो है वो कहाँ से वर्किंग शुरू कर रहा है और उसने कहाँ तक जो है वो कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते रहना। जो लास्ट बटन है वो है टूल पाथ। जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आप एनेबल या डिसेबल करते हैं फंक्शन ऑफ डिस्प्लेइंग टूल पाथ को। इसमें आपको नज़र आता है कि आपका टूल जो है वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा और कैसे कटिंग करेगा। In this slide, the control panel of the machine is represented by a conditional display on which the main technological information is displayed during the simulation. The current coordinates are shown in the diagram. X and Z coordinates are presented in the upper left part of the display. These are the coordinates of the programmable point lying on the tool path at the current time. The current technological parameters are displayed in yellow on the bottom left of the display. First one is spindle speed, S, which are revolution per minute, and the second one is feed rate,
which unit is millimeter per minute, and the third one is the current turret position tool number. And in the lower right part of the display are 6 cells to display the active model functions of the CNC system. From left to right, the following functions are displayed in their cells. First one, M03, is the spindle rotation direction, and the second one is coolant on, and the G54 is the option about the current working coordinate system, and G99 is the work feed type, and G01 is the work tool linear interpolation type. बेसिकली CNC सिमुलेटर की ये एक वीडियो है। जब आप CNC सिमुलेटर को ओपन करते हैं अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, तो आपके सामने CNC सिमुलेटर की ये मेन विंडो होती है। ये उसके डिफरेंट कैमराज हैं। कैमरा की लोकेशन है, कैमरा नंबर 5 है, ये कैमरा नंबर 1 है, ये कैमरा नंबर 2 है, जो कि पूरी स्क्रीन है। ये आपने क्लिक किया फाइल मैनेजर पे, इसमें थ्री ऑप्शन थे आपके पास, आपने ओपन प्रोजेक्ट को किया। ये डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड्स में बताया। इसमें से आप कोई भी प्रोग्राम को क्लिक करके इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप जाते हैं अपने वर्क पीस की पैरामीटर्स को एडजस्ट करने के लिए। ये आप उसके जो है डायमीटर्स को कम ज़्यादा कर रहे हैं, और ये ऊपर उसकी वर्क पीस की लेंथ है, ये क्लैम्प्ड लेंथ है। आप क्लैम्प लेंथ को कितना इसको क्लैम्प करना है, आपने इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने एंड अलाउंस, बेसिकली एंड अलाउंस ये जो आपके वर्क पीस और जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसके दरमियान में होता है। थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका है टूल के पैरामीटर्स। अब आपने टूल को कैसे सिलेक्ट करना है, टूल कैटलॉग में से आपने अपने टूल को ड्रैग करके आपने इसी टॉरट की पोजीशन पर रखना है, और यहाँ अब इसके ऑफसेट को सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे इसके कोड एडिटर में। कोड एडिटर में ये क्योंकि पहले से एक ओपन प्रोजेक्ट था तो मैंने इसको ओपन किया, और इसकी आपके सामने जो है वो एक फाइल नज़र आ रही है। ये जो नीचे बिलो आपको जो 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली आपके, अब प्ले का बटन दबा के मैंने जो है अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया है। प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो इसकी पूरी कमांड्स के साथ साथ जो है वो कूलेंट भी ऑन हुआ है, स्पिंडल भी चल पड़ा है, और मैं डिफरेंट कैमरास की लोकेशन से आपको अब टूल जो है वो वर्क पीस को काट रहा है। ये हमारा वर्क पीस है जो चक के अंदर घूम रहा है, और ये हमारा टूल है जो इसको काट रहा है। ये मैंने 2D जो है वो कैमरा के ज़रिए इसकी मैं देख रहा हूँ कि कैसे ये वर्किंग कर रहा है और कैसे ये अपनी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है। इसके बाद आपको जो है डिफरेंट इसके कैमरास की जो है वो लोकेशन नज़र आएगी, जैसे कि ये मेन कैमरा नंबर 2, ये कैमरा नंबर 3, और ये आपका कैमरा 4। अब जब आपका प्रोग्राम एंड हो गया तो स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा, वर्क पीस आपका पीछे हट जाएगा। अब ये हम डिस्कस कर रहे हैं इसके जो है लेफ़्ट साइड पर जो मुख्तलिफ मेन्यू थे, जिसमें लैंग्वेज का बटन था, जिसमें फीड के यूनिट्स का था, जिसमें साउंड का ऑन ऑफ का था, जिसमें हाई क्वालिटी 2D 3D फंक्शन थे, जिसमें कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम था, जिसमें ट्रेजेक्ट्री थी। ये आपके सामने डिफरेंट कैमराज हैं, और ये आपके सामने जो है इसकी जो है जूम इन और जूम ऑफ जो आउट का है ऑप्शन, और ये आपका जो है वो सर्कुलर ऑप्शन है। ये आपका जो है एक्स और जी डायरेक्शन में जो है वो जूम इन और जूम ऑफ का जो है वो ऑन आउट का जो है वो ऑप्शन है। बेसिकली ये आपका मेन कंट्रोल पैनल है, जिस पे आपने जो भी कमांड दी है वो इधर साथ साथ इसके स्टार्ट में चल रही होती है।